रिक्वेस्ट करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय परम पूज्य श्री भगत जी से कि विष्णु चौधरी जी का एक पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। Thank you. अभी आइए। थैंक यू। हाँ नहीं शुरू कर सकते हैं। कॉर्डलेस माइक है? हाँ वो माइक जो बंद। Good morning दोस्तों। It is a great pleasure for me कि आपने मौका दिया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। और सीधे मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनविजिबल मेडिसिन। जब भी कोई बोलता है मेडिसिन ले लो, दवा ले लो, तो दिमाग में पिक्चर आती है, टैबलेट होगा, वो कैप्सूल होगा, वो टॉनिक होगा, या फिर इंजेक्शन होगा, या फिर सर्जरी होगी। यही सारी चीजें दिमाग में आती हैं। जबकि सच्चाई ये है कि मेडिसिन, अगर डिक्शनरी में मेडिसिन का मीनिंग देखेंगे तो मेडिसिन का मतलब यह है एनी साइंस व्हिच कैन हेल्प यू टू प्रिवेंट और क्योर अ डिजीज इज कॉल्ड मेडिसिन। कोई भी साइंस जो आपकी बीमारी को ठीक कर दे या बीमारी होने ना दे तो वो मेडिसिन। साइंस, कोई भी साइंस, मतलब ये कि उसका एक लॉजिक होना चाहिए, उसको एविडेंस होना चाहिए, उसको साबित किया जा सके, तो वो मेडिसिन। तो आज हम ऐसी मेडिसिन की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने बताया, टैबलेट की बात की, कैप्सूल की बात की, टॉनिक की बात की, सबसे हैरानी की बात है कि दुनिया में एलोपैथी में ऐसी कोई भी दवा नहीं है एलोपैथी में जिससे कोई भी एक बीमारी पूरी छोड़ दी है, थोड़ी बहुत भी ठीक हो जाए। कोई भी एक बीमारी, अगर आप सोचने पे लग जाए तो एक करके आप देखेंगे दवाइयां तो हैं, लेकिन क्या उससे बीमारियां ठीक हो जाती हैं या थोड़ी ठीक होती है? 1%, 0.1%। क्या ऐसा कोई सबूत है? है ही नहीं। क्या डायबिटीज की बीमारी से डायबिटीज ठीक हो जाती है? ब्लड प्रेशर की बीमारी दवाई से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है? कोई बोलेगा कि फीवर ठीक होता है पैरासिटामोल से। फीवर तो बीमारी नहीं है ना, फीवर तो हमारे डिफेंस सिस्टम है, उसको क्यों ठीक करना? फीवर का मतलब है कि वो हमारे बॉडी में इंफेक्शन है, उसको मारना चाहता है, तो बॉडी ने फीवर क्रिएट किया एंड दैट विल किल द इंफेक्शन। आपको ये पता होना चाहिए, अगर कैंसर पेशेंट है, अगर उसको फीवर आ जाए, कैंसर पेशेंट को अगर फीवर आ जाए और उसने फीवर को ठीक नहीं किया, पैरासिटामोल नहीं लिया, तो उसका कैंसर ठीक हो जाता है, उसका ट्यूमर रिग्रेस करने लगता है, छोटा होने लगता है। तो फीवर हमारे बॉडी का एक बहुत बड़ा वेपन है, टूल है, हथियार है, वो बीमारी नहीं है। 1950 से पहले जब कैंसर होता था पेशेंट्स को, तो उन पेशेंट्स को उठा के मलेरिया के पेशेंट का रख दिया जाता था, इस उम्मीद से कि मलेरिया के पेशेंट का रहेंगे तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, बुखार आने से कैंसर ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही होता था, अब भी ऐसा ही होता है। अगर फीवर आ जाए कैंसर पेशेंट को, तो अगर हम उसको दवाई से नीचे ना करें तो उसका कैंसर सेल डायज, उसका ट्यूमर रिग्रेस होने लगता है, उसका दर्द कम होने लगता है, उसकी वीकनेस जाने लगती है, उसका हीमोग्लोबिन ऊपर आने लगता है, यानी कि वो पूरी तरह से ठीक होने लगता है, ठीक हो जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं या लोग क्या करते हैं, जैसे ही पेशेंट को या किसी भी इंसान को फीवर आ जाए तो फीवर अपना काम कर पाए उससे पहले ही आप पैरासिटामोल देके, दवाई देके उसको रोक देते हैं, यानी कि बॉडी का जो हथियार है उस हथियार को यूज होने नहीं देते। तो वो बॉडी हथियार कब यूज करती है? जब उसको लगता है कि कोई दुश्मन आ गया है, कोई इंफेक्शन को मारना हो, कोई वायरस को मारना हो, कोई बैक्टीरिया को मारना हो, या कैंसर सेल को खत्म करना हो, उन्हें रोकना हो, तो बॉडी एक हथियार के तौर पे फीवर बुलाती है। तो फीवर तो बीमारी है ही नहीं, वो तो बल्कि एक इलाज है हमारे बॉडी का। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ
कि दुनिया में कोई भी ऐसी दवा नहीं एलोपैथी में जिससे कोई भी एक बीमारी पूरी छोड़ दीजिए थोड़ा बहुत ही ठीक हो जाए, है ही नहीं। तो जब भी कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस होता है पूरे जहां देश विदेश में, मैं यही से शुरू करता हूँ, और जहाँ पे सारे डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, और मैं ये बोलता हूँ कि एक दवाई का नाम बताइए, लेकिन सबूत भी देना पड़ेगा आपको, एविडेंस देना पड़ेगा। तो है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? तो जब कोई ऐसी दवाई है नहीं तो ये सिस्टम कैसे चल रहा है? ये सिस्टम चल रहा है, आप देखेंगे कि एलोपैथी को बोलते हैं मॉडर्न मेडिसिन, यानी कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जिसकी सबूत हो। तो सबूत पे जाके जब देखते हैं तो ये सबूत ये है जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। मान लो कैंसर पेशेंट की बात करते हैं, मान लो ये सारे, मान लेते हैं आप सब कैंसर पेशेंट हैं, सारे एक जैसे कैंसर पेशेंट हैं, लेकिन एक कैंसर पेशेंट जो डॉक्टर बोलने में दवाई लेते हैं, कीमोथेरेपी लेते हैं, रेडिएशन लेते हैं, दूसरे कैंसर पेशेंट जो कुछ नहीं करते। दुनिया भर के एविडेंसेस ये कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस, कि जो कुछ नहीं करते हैं उनके लाइफ स्पैन ज्यादा होता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू जो उसको इंटरवीन करते हैं। दैट इज द थिंग, यानी कि डॉक्टर बोलता कीमोथेरेपी करा लो, अगर नहीं कराएगा तो उसकी आयु लंबी होगी, नहीं कराएगा तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, और कराएगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब होगी, जितने दिन तक जिएगा तो कम जिएगा, और जितने दिन तक जिएगा बहुत बुरी तरह जिएगा। दैट इज इट, यही इसका सत्य है। लेकिन इस सत्य के बाद भी लोग क्यों कराते हैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन, क्यों डॉक्टर के पास जाते हैं? क्योंकि उनको उम्मीद है, उन्हें लगता है, या फिर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कोई और ऑप्शन नहीं है तो एक ऑप्शन तो ये है ना कुछ ना करने का, ये ऑप्शन तो फिर भी है। लेकिन यहीं पे हमें एजुकेट करना पड़ेगा, और यही मुझे लगता है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य है या होना चाहिए, कि जो चीज छुपाई जा रही, जो चीज लोगों तक पहुंचाई नहीं जा रही, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, तो उन चीजों को उजागर करने का जो एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम विचार कर सके, क्या गलत हो रहा है वो समझ सके, उसको ठीक कर सके। क्या गलत हो रहा है इसको समझ जाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ, रिसेंट एविडेंस। रिसेंट याद कीजिए, इस साल की शुरुआत में 6 जनवरी टू वेरी प्रिसाइज 6 जनवरी को, मैं तो टीवी देखता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग टीवी जो देखते हैं, 6 जनवरी को टीवी के स्क्रीन पे, प्रोपेगेंडा मीडिया के स्क्रीन पे बहुत सारा एक डरावना पिक्चर आ गया, चाइना से एक HMPV का नाम का वायरस आ गया, ऐसे ही था ना, राइट? और वहां पे वही वाला सीन याद कीजिए 2020 वाला, कि वहां पे लॉकडाउन लगने वाला है, वहां पे मास्क पहन रहे, PPE के बहुत सारे विजुअल पिक्चर आने लगे। एक दिन 2 दिन बाद खबर आती है कि अहमदाबाद में एक केस पकड़ा गया, राइट? फिर वहां के विजुअल शुरू हो गए। 2-4 दिन बाद गुजरात में एक जगह और पाया गया, 3-4 दिन बाद महाराष्ट्र में और पाया गया। तो धीरे धीरे माहौल बन रहा था। फिर आप देखेंगे प्रोपेगेंडा मीडिया में जो आया था कि क्या लॉकडाउन दोबारा लगने वाला, इस तरह के हेडलाइन आने लगे। याद आ रहा आपको? अभी पिछले महीने की बात है ना? तो माहौल बनता जा रहा था। जिस तरह से, जिस प्रकार जब आप कोई डरावनी मूवी देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं डरावनी, तो आपको पता है कि यहाँ कोई भूत नहीं है, लेकिन फिर भी मूवी देखते वक्त डर लगता है ना। पता है कि कोई आके अटैक नहीं करेगा, लेकिन डर तो लगता है। पता है सब झूठ है, यूं ही है, एंटरटेनमेंट, लेकिन फिर भी डरते हैं ना। वो डर रियल होता है, एक्चुअली में डर लगता है। तो हमारा ब्रेन इमोशन पे काम करता है, एविडेंस पे काम करता है। एविडेंस तो ये कहता है कि भूत यहाँ आएगा नहीं, मुझे पहले से पता है। उस थॉट को बाईपास करके रियलिटी में आप डरते हैं, है ना? तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आप जो टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको पता है कि सच नहीं है, फिर भी डर लग रहा है ना? यही इसकी सच्चाई है। एक झूठ को अगर बहुत बार बोला जाए तो वो हमारा ब्रेन इट परसीव इट एज ए ट्रूथ। यही साइंस है। एक झूठ को कई बार बोलो, कई बार इसका नाम है, इसका द ट्रूथ इफेक्ट, राइट? तो ट्रूथ इफेक्ट या इल्यूजन ट्रूथ इफेक्ट, इसका जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट उनको पता होगा, इल्यूजन ट्रूथ इफेक्ट। व्हाट इज इल्यूजन ट्रूथ इफेक्ट? कोई भी एक झूठ पकड़ लो, सोच लो मन में, फॉर एग्जांपल कि भाई एलियन आने वाले हैं, झूठ है पता है। अब ये एलियन आने वाले हैं कई बार बोलो किसी एक इंसान को, कई लोग बोले, कुछ दिन बाद उसको लगने लगेगा वाकई में आने वाला। एविडेंस मत दो, एविडेंस तो है नहीं ना, झूठ है, तो बिलीव करने लगेगा, उसकी इमोशन वैसे हो जाएगी। और जब वो पूरी तरह डर जाए तो जो भी चाहे उसे करा दो, कि भाई आपको घर पे बंद रहना तो घर पे बंद रहेंगे,
अच्छा आपको अपने टैक्स का इतना पैसा देना है, उस पैसे से हम हथियार बनाएंगे, एलियन को मार के भगा देंगे, आप दे देंगे। फिर एक दिन अनाउंस होगा कि आज एलियन भाग गया, अब आप घर से बाहर निकल सकते हैं, अपने मास्क भी उतार सकते हैं, आप मान जाएंगे। क्यों? आप डर गए। जब आप डर जाते हैं तब आपको लूटना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसा ही एक खेल, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। तो चलें, आप देखिए ये मेरे ऑफिस का 15 जनवरी का वीडियो है। मैंने बोला अपने दिल्ली में एक कोविड लैब में, एचएमपीवी लैब में, कि मुझे लगता है कि मेरे ऑफिस में बहुत सारे एचएमपीवी के पॉजिटिव केसेस हैं, आगे टेस्ट करा लो। तो दिल्ली के ऑथराइज्ड लैब से वो आए और मेरे ऑफिस के स्टाफ देख रहे हैं, इन सबका एचएमपीवी के लिए सैंपल ले लिया, राइट। तो ये 15 जनवरी, नेक्स्ट प्लीज। अगले दिन 16 जनवरी को मैंने बोला कि मुझे लगता है कि हमारे गलियों में कुछ कुत्ते हैं, उनको भी एचएमपीवी हो गया होगा, टेस्ट कर लो। तो फिर वो लैब वाले आए और उन सब का सैंपल ले लिया, राइट। अब देख रहे हैं ये 16 जनवरी, राइट, गली के कुत्ते मिले, जो मिले, सैंपल ले लिया। और लेने के बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने बोला इनका टेस्ट कर दो, एचएमपीवी वाला सैंपल तो आ गया। तो ये टेस्ट किट है, ये टेस्ट किट 50 टेस्ट हो सकते हैं, इसका कीमत है 75,000 रुपए, 50 टेस्ट का, प्लस जो लैब का कॉस्ट है वो इतना ही, और करीब 2.25 लाख मेरे लग गए। और नेक्स्ट प्लीज। टेस्ट का रिजल्ट ये आया कि 50 में से 7 सैंपल्स पॉजिटिव आ गए, एचएमपीवी पॉजिटिव। उनमें से एक कुत्ता भी पॉजिटिव आ गया, यानी कि देश का पहला एचएमपीवी पॉजिटिव कुत्ता। सोचिए, राइट, एक कुत्ता काटे तो कितना खतरनाक होगा, एक एचएमपीवी पॉजिटिव कुत्ता काटे तो कितना खतरनाक हो सकता है, राइट। तो इस तरह से, और यहां आप देख रहे हैं ये 10 के 10 एक ही इंसान के हैं, मतलब एक ही सैंपल को 10 बार टेस्ट किया, उनमें से एक पॉजिटिव आ गया, वो इंसान आपके सामने खड़ा है, राइट। यानी कि मैं तो ये बोलता हूं कि हरियाणा का मैं पहला एचएमपीवी पॉजिटिव पेशेंट बन गया। हरियाणा का कोई केस था नहीं, तो मैंने कहा मेरा नाम पहले नंबर पे आना चाहिए इस हिसाब से, तो है ना, अगर टेस्ट के हिसाब से ही है तो यहाँ पे नियम सिर्फ इतना है कि एक टेस्ट को कई बार करेंगे तो पॉजिटिव आ जाता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है। तो ये टेस्ट से ये प्रूव होता है कि you take any 50 samples, random samples, human sample, animal sample, and the chances are 10% of them will be HMPV positive. So that was 16th of January, ये 16 जनवरी की बात है। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो सैंपल है ये डॉग का सैंपल है जो HMPV पॉजिटिव, राइट, 2 लाइन ऊपर जा रहे हैं तो इट इज पॉजिटिव सैंपल। नेक्स्ट, ये ह्यूमन सैंपल का एक एग्जांपल है कि एचएमपीवी पॉजिटिव, लाइन ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, इस तरह से होता है। नेक्स्ट, तो इफ यू वांट टू सी ऑल द टेस्ट, अगर हमने क्या किया, वो टेस्ट लैब में कैमरे लगा दिए कि हम हर चीज को रिकॉर्ड करेंगे, विल रिकॉर्ड एवरीथिंग, एंड वो पूरा रिकॉर्डिंग, ताकि वो बाद में मुकर ना जाए, है ना, नहीं हमारे यहाँ कोई टेस्ट नहीं हुआ, कुछ भी बोल सकते हैं ना, राइट, जब उनको पता चल गया असलियत क्या है। तो इफ यू गो टू दिस bishrup.com/hmpv test, you'll find the video recording and all the evidence is there, right? तो ये है 16 जनवरी की बात। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट, so then 23rd जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन I released the book HMPV Pandemic Launch, पैंडेमिक नहीं, Pandemic Launch, और इसके अंदर वो सारे सबूत डाल दिए। वो किताब कुछ यहाँ भी है ना, करें तो आप गौर करेंगे 24 जनवरी से टीवी के स्क्रीन से एचएमपीवी का भूत गायब हो गया। आता है तो दिस इज द बुक, एंड आप सबके लिए एक किताब मैं लाया हूं जो आज इसके बाद मिल जाएगा, आफ्टर दिस यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो
अब HMTV का खेल नहीं है 24 जनवरी से, वो भांडा इसके अंदर फूट गया, right? It is widely circulated, we released in press, so media, medical mafia nexus, right? वो डिस्ट्रॉय हो गया। उनका तो प्लान ये था कि दोबारा से लॉकडाउन करना है, सारा कुछ वही खेल शुरू करना है, वैक्सीन आना था, राइट? तो अब वो प्लान उनका फेल हो गया। We all have to understand that there are 8 billion population in the world, for example. Each one of us are having HMPV antigen or antibody in our body. 100% of the human population. Right? Here there are 200 people. All of us are having HMPV, either antigen or antibody. That was the antigen test, protein test. Right? So if you are having antibody, then you will not have the antigen. If you are having antigen, then you will not have the antibody. So it is nothing new. Nothing new. We all are having HMPV. Right? So there is nothing new about it. Right? It does not mean that we are going to get killed by HMPV. It is a simple virus, and there are many other viruses which are staying with us at this moment. Right? So, before I talk about the invisible medicine, I am talking of invisible disease they create in your mind. Right? बीमारी जो अपने दिमाग में बना है वो रियलिटी में कुछ नहीं है, right? एक झूठ को 1000 बार बोलो, say one lie 1000 times, it looks like it as if it is the truth. So that is what is happening. Next slide. असली जो pandemic, the real pandemic is the cancer. If you see in last 3 years, you will realize that now cancer is as common cold, isn't it? याद करके देखिए आपके पड़ोसी में, दोस्तों में, इसमें उसमें हर दिन कोई ना कोई कैंसर का नया पेशेंट मिल जाता है। It had not been the case 3-4 years back. Why? Because the people who took the COVID-19 vaccine, inside the COVID-19 vaccine there was one ingredient called SB40, and this is a virus which causes cancer. If you want to see the evidence that it is there in this and it causes cancer, vishrup.com/SB40, you will see it, right? So this means those who have taken COVID-19 2 doses, they are now more prone to become a cancer patient. How many of you have taken COVID-19 vaccine? Be careful, you are going to die very soon. आपने नहीं लिया, जिन्होंने लिया नहीं लिया, right? So by bringing a fear in your mind, scaring you, they forced you to take COVID-19 vaccine, and now the result you can see, the cancer became more widespread in comparison to what it was earlier. Right? And the evidence is here. And what I am saying now, I told it in 2020 before the vaccine came. How many of you know that 2020 मैंने बोला था, कितने लोगों को पता? आप में से कुछ लोगों ने सुना भी था। I released a book at that time also saying that this will happen. Right? The name of the book is COVID-1981 Virus and the Vaccine. All the evidence I gave at that point, 2020 में, and now you can see the reality. So, if you are in a scare mode, if you are fearful, then it is easy, right, to make you comply everything. Even if that may kill you, that is already killing you. सब लोग हार्ट अटैक से नहीं मरेंगे. Not everybody will die of heart attack because of COVID-19 vaccine. Some will have cancer. Some other will have erectile dysfunction. Some other will have diabetes. Some other will have kidney disease. But most of them will have something which otherwise they would not have had they not taken the COVID-19 vaccine. Right? So that is the truth. But those people who are in my contact, right, people directly, indirectly, they knew and they did not take vaccine, now they are happy. So those who have taken vaccine, what they have to do, we'll talk about it later. But here I am telling, the point I want to make, don't believe what the media says. Don't believe what your doctor says. Or more important, don't watch the television, don't go to the doctor. Because in any way, they don't have anything which can help you. They don't have. If at all they have, you can tell me what they have which can help you. It can only make your situation worse.
So let's try to understand that. Next slide, please. Now, if you read this, cigarette, gutka, chemotherapy, radiation causes cancer. So the first two lines, first two words, gutka, cigarette, it looks to be familiar. Okay, gutka, cigarette causes cancer. We all know it. But chemotherapy, radiation causes cancer even more in comparison to गुटखा and cigarette. गुटखा सिगरेट से कैंसर होता है पता है, लेकिन उससे सबको कैंसर नहीं हो जाएगा गुटखा सिगरेट से, लेकिन कीमोथेरेपी रेडिएशन से सबको कैंसर हो जाता है. Chemotherapy and radiation do not cure the cancer. It is one of the most prominent cause of creating a cancer. You have to understand this. वो कैंसर ठीक नहीं करता है, कैंसर बनाता है, right? So this I've been telling for long. Let's say a cancer patient comes to you and you say you want to cure cancer, smoke 20 cigarettes. Will it not look funny? कि आज ही बात कर रहे हैं, मुझे कैंसर ऊपर सिगरेट पीने बोल रहे. तो बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है कि कैंसर पेशेंट को अगर जैसे सिगरेट पीना बोलना बेवकूफी है, वैसे कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी करने बोलना वो नहीं बड़ा बेवकूफी है, उससे भी ज्यादा, राइट? लेकिन लोग कर रहे हैं, आपके आंखों के सामने कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट प्लीज. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये यहाँ पीछे विजिबल है और shall I put it at the top? ऊपर रख लें थोड़ा सा ना इसको. Now, इसे मैं बोलता हूँ कैंसर प्रॉपर्टी. How the cancer works in your body, let's try to understand through this model. At any point of time, even at this point of time, in your body, there are healthy cells and there are cancer cells also. हर पल आपके बॉडी में हेल्दी सेल भी होते हैं, कैंसर सेल भी होते हैं, अभी भी हैं. 100% of us, those who are 40 years and above, if then you do the biopsy of thyroid, all of us through the biopsy will be called as a cancer patient. 70% of in prostate, men, cancer patient. 40% of in the breast, 40% of the women in the breast, cancer patients. मतलब हमारे सबके बॉडी में कैंसर सेल है ही हैं. कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं जिसके बॉडी में कैंसर सेल नहीं है. जिस तरह से हर एक के बॉडी में एचआईवी वायरस का एंटीबॉडी है, एंटीजन है ही है. But that does not mean that we are going to die of cancer. Right? In our body there are cancer cells and that is universal for all of us. So saying through biopsy, oh, in your body we found cancer, it is nothing unusual, it is there. Now imagine, even if we all have cancer cell in our body, हम सबके बॉडी में कैंसर सेल होने के बावजूद भी हम क्यों नहीं मरेंगे उससे? क्योंकि ये कैंसर सेल मान लेते हैं and these are normal cells and this is the boundary. So what happens? These normal cell, it pushes the boundary and it keeps the cancer cell in restricted area, right? It restricted the movement of the cancer cell, right? Wherever the cancer cells are, they are restricted there only. Who does it? The normal cell. These cells are very, very powerful. They come and they discipline the cancer cell. So we are not going to die of cancer, even if there are cancer cells in our body, right? So ये cancer कबड्डी होती रहती है. So the job of the normal cell is they keep the cancer cell in the position. वहाँ से हिलने नहीं देना है, right? That's what is happening right now also. There is a fight going on between cancer cell and normal cell at every moment of our life, and all the time the normal cells are winning, the cancer cells are restricted, so we are not dying of cancer. But if you want to make the cancer cell powerful, if the cancer cell becomes powerful, then what will they will do? They will try to push back. They will try to push back, right? They will try to increase their boundaries. वो अपने boundary को increase करेंगे if they become powerful. In some of the people, they give the power to the cancer cell. Then the reverse happens. They they push back and they try to encroach the area of the normal cell, right?
How you can give power to the cancer cells? कैसे देंगे power? You by smoking every day, by having good diet every day, lot of refined food. But the most important is if you eat after sunset. If you eat after sunset, you are giving power to the cancer cell. अगर आप सूरज अस्त होने के बाद खाते हैं तो कैंसर सेल को पावर देगा. If you want to make the cancer cell very very strong, what you have to do? You have to eat as late as possible, midnight. They become very powerful. So if you can do that every midnight, I will have the dinner 12 night. So this cell will become very powerful. Like the people who are in night shift, right? Soldiers or emergency doctors, right? There are very very crucial profession where you have to be awake at the night. Since you are awake at the night, क्योंकि आप रात को जगह तो रात में खाओगे ना, दिन को तो सो रहे हैं. So they are the one who are more prone to cancer in comparison to the normal population. Normal population के comparison में उनमें cancer ज़्यादा पाया जाता है. उनकी मौत जो लोग नाइट ड्यूटी में रहते हैं, सोल्जर्स हो गए, फ्लाइट अटेंडेंट हो गए, पायलट्स हो गए, right? Why? Because when you eat after sunset, you are making the cancer cell powerful, and when you are making the cancer cell powerful, they are pushing their boundaries. They are pushing their boundaries. They are restricting. They are encroaching the boundary of the normal cells. That is called tumor, right? So that is how the tumor grows, and that gives you pain. The normal cell, they shout with pain, right? So these are two methods. You can have refined food. You can have gutka cigarette. Or the best thing to make yourself cancer patient, every night you try to eat in the middle of the night, 1 बजे रात के 2 बजे. Because nowadays there is a Zomato online, you can order food at any point of time. कभी भी order कर सकते हैं. Netflix में entertainment कभी भी कर सकते हैं. Work from home, in the midnight you can work. So the chances are that you can have the dinner or late night you can indulge in eating, making the cancer more powerful. So these are the people who can become cancer patient very, very fast, right? So now, how we make them more powerful? By eating late, right? So, but if you want to make it even more powerful, the next slide. Next slide. Then you look at this. When you do biopsy, when you do mammogram, when you do PET scan, you make these cancer cells even more powerful. But let me change it. When you do biopsy, when you do PET scan, when you do mammogram, you make this normal cell cancer cell, normal cell cancer cell, normal cell cancer cell. They now fight. They become the part of the cancer cell. Now they fight against your body only. They fight against your body only. They fight against your body only. How to convert the normal cell to cancer cell? Go for biopsy, go for PET scan, go for mammogram. Right? If you want that I must die of cancer, but these my cells should become my enemy, what you do? Biopsy, mammogram, PET scan. So whenever the doctor says, I want to see whether your body is having cancer or not, go for biopsy. So in reality, he is saying that I want you to become a cancer patient, so go for biopsy. Whatever I just told, you can see the evidence there. Next slide. There are more evidences, right? So जो मैं आपको बता रहा हूं यही सत्य है, इसका सबूत ये रहा आपके आंखों के सामने. जब भी डॉक्टर बोले बायोप्सी कराना है, पेट स्कैन कराना है, मेमोग्राम कराना है, तो आप उसको ट्रांसलेट कीजिए. डॉक्टर ये बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कि आपको कैंसर हो जाए, कैंसर से तड़प तड़प के मरे. क्योंकि जब आप ये कराते हैं तो नॉर्मल सेल पाला बदल लेते हैं, वो कैंसर सेल बन जाते हैं. क्लियर होगी बात? राइट. अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. ये सारे एविडेंसेस हैं जो मैं बोल रहा हूं, उसके एविडेंसेस हैं. नेक्स्ट स्लाइड. नहीं, पीछे वाला स्लाइड कीजिए. पीछे, बैक बैक बैक. ठीक है, और बैक. ठीक है,
Go forward. Next. रेडिएशन कॉजेज कैंसर। जिस प्रकार बायोप्सी से कैंसर होता है, नेक्स्ट स्टेज क्या है? डॉक्टर क्या बोलेगा? ओ बायोप्सी से कैंसर, यू टू गो फॉर रेडिएशन, यू टू गो फॉर कीमोथेरेपी, ये बोलेगा ना। जब आप कीमोथेरेपी कराएंगे, रेडिएशन कराएंगे, जो बचे खुचे हैं ये भी पारा बदल देंगे, जो सबसे स्ट्रॉन्गर है ये भी पारा बदल देगा, राइट? सो हाउ टू किल अ कैंसर पेशेंट वेरी फास्ट? दैट इज recommend them chemotherapy, recommend them radiation, right? Whatever I just told you, the evidence is near you. Next, ये evidences हैं, right? और अभी भी अगर वो पेशेंट ना मरे तो एक होता नहीं सबसे बड़ा हथियार, राइट, ब्रह्मास्त्र मारने का। नेक्स्ट, सर्जरी। अब तो ट्यूमर बड़ा हो गया, सर्जरी करना पड़ेगा। Surgery, when the surgery is done, cancer cells spread even faster, very very fast, right? New cancer cell, normal cell become new cancer cell. Now the whole body is cancer. Normal cells are very few, right? Surgery causes cancer. It do not help you in recovery. It does not help you to feel good. It only kills the remaining normal cell. Next, these are the evidences which you can see, right? जो मैंने बताया वो एविडेंस है। सो इट इज अ कैंसर इंडस्ट्री, इट इज नॉट अ हॉस्पिटल, राइट? दे आर प्रोड्यूसिंग कैंसर पेशेंट, दे आर मैन्युफैक्चरिंग कैंसर पेशेंट्स इन द नेम ऑफ ट्रीटमेंट। दे आर नॉट ट्रीटिंग देम, यू, दे आर ट्रीटिंग देमसेल्फ, राइट? ट्रीटिंग देयर बिजनेस गोल्स। सो दिस इज हाउ द कैंसर सेल्स बिहेव। नाउ द नेक्स्ट वन, इम्यूनोथेरेपी, a new term in cancer treatment, immunotherapy। अब लोगों को लगता है इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनिटी को बूस्ट, कुछ तो होगा, फायदा ही होगा। Immunotherapy is similarly fatal. Immunotherapy, what it causes, it weakens the remaining cells. इन सेल को और कमजोर कर देते हैं, इन सेल की जो पावर है उसको खत्म कर देते हैं। If these cells becomes powerless, what will happen? These will become more powerful, right? And the latest evidence of it is there in front of the screen, as you can see, right? ये एविडेंस है। तो जब भी एक कैंसर पेशेंट को डॉक्टर बोलता है कीमोथेरेपी करा लो, तो एक्चुअली वो बोल रहा है कि आप जल्दी नहीं मर रहे हो, जल्दी नहीं मर जाओगे, राइट? इट विल मेक द लाइफ स्पैन स्मॉलर, इट विल मेक द क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्स। नेक्स्ट प्लीज। अब करना क्या होगा? What to do to recover a cancer patient? Suppose a cancer patient after going through chemotherapy, radiation, सारा कुछ करके उसकी किस्मत अच्छी थी, तब भी वो बच गया, आपके पास आया। Step 1, stop doing all those things. Don't go back to the doctor. दोबारा जाओ मत। पहला स्टेप तो क्लियर है। वो बोलता है कि कीमोथेरेपी के 4 साइकिल हो गए, 2 और बाकी वो करा लूं क्या? मैंने भाई इतना पॉइजन ले लिया, पॉइजन में थोड़ा पॉइजन में पड़ा, वो भी पी लूं क्या? सो जितना ले लिया, वहीं रुक जाओ, दोबारा मत जाना ही नहीं उधर। नहीं, डॉक्टर बहुत नाराज होगा। अरे नाराज तब होगा ना जब जाएंगे वहां पे, घर से तो उठा के लेके जाएंगे नहीं। अरे तो ज्यादातर मोस्टली द सोसाइटी नाराज होता है। आपने कीमोथेरेपी नहीं, पड़ोसी बोलेगा, रिश्तेदार बोलेगा, जान तो आपकी है ना। तो दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी नीड नॉट टू सेटिस्फाई द डॉक्टर, द सोसाइटी, द पीपल नेक्स्ट डोर, वी हैव टू सेटिस्फाई आवर बॉडी, आवर सेल्स। They are dying. Nobody else is dying, right? Nobody will cry when you die, right? सब अपने काम में मगन हो जाएगा, आपने देखा भी है, right? कुछ देर के लिए होता है, फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो यहाँ एविडेंस क्या कह रहा है? The evidence says very clearly, chemotherapy, radiation, surgery, or biopsy, mammogram, these are the ingredient tools to make your normal person into a cancer patient. So most of the cancer patients, they come to us only when they have already gone through all this. Now, what is the solution? Solution is, if you can convert this normal cell again back, if you can convert this back, if you can convert this and make them weaker, right, like this. How you can do it? The first step, if fever happens to cancer patient, अगर कैंसर पेशेंट को फीवर होता है, the cancer cells becomes weak, they go back to the normal size, right? So if the cancer patients
suffer from fever, then the cancer cell push back. They start regressing. Tumor का size कम होने लगेगा, hemoglobin बढ़ने लगेगा, energy ज़्यादा आने लगेगी, right? Then what happens? This boundary they can start pushing back again against the cancer cell, and normal cells they come back to their own zone, right? Fever is a solution of cancer. So now, how to cause fever in a patient? How we do it? Next slide. जो मैंने अभी बताया, what I just told you, these are the evidences, right? Whatever I am telling you, it is the mainstream evidences, right? Next slide, please. ये भी evidence है. Next slide. Right. तो यहाँ पे फीवर हम कैसे करते हैं, उस पे आने के लिए सबसे पहले फीवर तो जब आएगा तब आएगा, but how to make the normal cell powerful and how to make the cancer cell powerless, so that the cancer cell can die their own death. It should die their own death. The tumor should regress. The first medicine which we give in our hospital, we have 20 hospitals in the name of HIMSS, right, all over the country, and now we have more than 500 clinics. लाहौर की गलियों से लेकर लंदन की स्ट्रीट तक 500 क्लिनिक है हमारे Dr.B.R.C क्लिनिक एट द रेट होम. आप में से कुछ लोगों ने सुना है ना? आपको पता है ना, अभी हमने स्टार्ट किया. सो हम ये मानते हैं कि बड़े से बड़े दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर पे ही हो सकता है. इसीलिए वी कॉल इट Dr.B.R.C क्लिनिक एट द रेट होम. तो चाहे आप हिम्स हॉस्पिटल में आएंगे जहां लाख रुपए की फीस लगती है, हर दिन का 20,000 रुपए लगता है, या हमारे क्लिनिक में आएंगे जहां पे पूरा 1 महीने का 4,500 रुपए लगता है, या जो ये वीडियो भी चल रहा है, ये वीडियो पोस्ट कर देंगे, जो ये वीडियो देखेगा तब घर पे करेगा तब भी वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि यही चीज हम हॉस्पिटल में करके देते हैं. द सेम थिंग वी आस्क टू डू इट when they come to a clinic, and same thing patient can do on their own even without our supervision by listening to watching this video. इस वीडियो को देखने से भी उतना ही ठीक होगा. तो पहली चीज जो हम करते हैं, we have our center in Malaysia, in Vietnam, number in Hanoi, in Ho Chi Minh, right? In as many as 10 countries, including UK, Pakistan, सब जगह, नेपाल से का हमारा center, right? तो in all our center, the first medicine we give to the patient is, all kind of patient, time as medicine. The most powerful medicine on earth, time as medicine. So whenever any patient comes to you next time, whatever may be the illness, physical or mental, the first medicine you have to give is the time as medicine. What is this medicine? Next please. Time as medicine you can see it here. What we do, we ask the patient, don't eat anything before 8 a.m. Don't eat anything after 6 p.m. सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना, रात के शाम के 6 बजे बाद कुछ नहीं खाना. Eat within the bracket of 10 hours and fast for how many hours? Right? 14 hours. जैसे ही आप ये करेंगे, you have to remember one very important thing. The cancer cells are fed, they eat only after the sunset. But you are not giving any food to the cancer patient because you finish your dinner before 6 p.m. The moment you start doing it, we have seen consistently in our hospital, within the first week to 10 days, constipation reduces, acidity reduces, bloating reduces, sleep increases. But if you continue to do it for second week, by the end of second week, joint pain would joint pain reduces. But if you continue to do it for 3 weeks, by the end of 3 weeks, blood sugar, blood pressure वो नीचे आने लगता है. सिर्फ एक बदलाव. But if you continue to do it for 4 weeks, gastric esophageal reflux disease, weight, जो मोटे लोग हैं वो कम होने लगता है. Means every week you see changes in your body, every week, by giving one medicine, time as medicine. For cancer, what happens? When you don't eat after sunset, but body needs nutrition, so body what they do? They break the tumor cells. You take any tumor, see under the microscope, you'll find tumor is a storehouse of nutrition. Tumor consists of all kind of vitamin, mineral, carbohydrate, protein, fat. Tumor is a storehouse of good minerals. Tumor is not a bad thing. It is only at the bad place. So when you don't eat after 6 p.m. and when you fast for 14 hours, body क्या करता है?
it breaks the tumor, takes the nutrient and supply to the body. This means you are getting rid of the tumor. Tumor से आप कुछ करा नहीं, body gets the nutrition. When you do it every single day, don't eat after 6 p.m. Your tumor, it reduces, your pain reduces, weakness reduces, and you start improving. That's the first important medicine which we give. In our hospital, the kitchen closes at 6 p.m. Finish. अगर तब तक नहीं खाया तो कल ही खाओ. तो भूख लगी क्या करेंगे? अरे आपकी बॉडी में ट्यूमर है ना, बॉडी तोड़ेगा उसको, खाए खिलाएगा आपके बॉडी को. Right? Need not to worry about it. Give a chance to the body to break those tumor, break those stone, break those blockages. ये ट्यूमर, ये ब्लॉकेज, the stone, polyp, fissures, यही सारे तो बीमारियां हैं. But they are the storehouse. They are the good nutrition. This is called autophagy. नाम सुना होगा आपने autophagy? It got 3 Nobel Prize. Right? तो ये साइंस है. Time as medicine. The first medicine we give is the time as medicine. But if we want to make it very, very fast, we give the second medicine, food as medicine. Next slide, please. Next slide. Food as medicine. In food as medicine, आप में से कितने लोगों ने आज से पहले DIP diet सुना कभी? Most of you heard of it, right? It is more than 12 years I have been prescribing and propagating DIP diet. So 8 a.m. to 6 p.m. be on DIP diet. जब ऐसा कर देते हैं तो स्पीड ऑफ रिकवरी बिकम फास्ट हो. कितना फास्ट? नेक्स्ट स्लाइड. Within 72 hours, for most of the people, their blood sugar reduces to the level कि इंसुलिन छोड़ना जरूरी होता है, दवाइयां छोड़नी जरूरी हो जाती है. 3 दिन से 1 हफ्ते के बीच में ब्लड प्रेशर reduces, cholesterol reduces, intestinal disorder vanishes. If you can do it for 1 month, 10% body weight reduced for the fat people, heart disease vanishes. Means angina goes away, pain goes away. If you can do it for 2 months, thyroid disease vanishes for most of the people. If you can do it for 6 months, all the symptoms of cancer vanishes. Tumor, weakness, pain, right? Asthma, the inhaler, the people don't need, right? Arthritis, all kind of things are vanished. If you can do it for 8 months, kidney dysfunction, liver disorder, skin disease starts disappearing, right? 3 months, glaucoma, cataract, myopia, spectacles. Here also many people are wearing spectacles. If you want to get rid of spectacles, do it for 3 months. 3 महीना करेंगे, then it will be difficult to wear the spectacles because your body eyes do not need it. So only without spectacles you will be able to see clearly, right? So genetic disease up to 1 year we see benefit in genetic disease also. So here 2 medicine I prescribe, time as medicine and food as medicine. When you combine both of them, then you see the wonder. So for those who are new, what is DIP diet? Next slide. In DIP diet, step 1, till 12 noon be only on fruits, 8 a.m. to 12 noon. How much fruits? 3 to 4 kind of fruits or even 1. Your body weight into 10. My body weight is 70 kg into 10, that becomes 700, make it grams. 700 grams of 3 to 4 kind of fruits till 12 noon. Nothing else. At least this much. For example, today, before coming to this lecture, what was my breakfast upstairs? 1 dozen केले खा लिए, हो गया breakfast. 1 dozen बनाना, 1 dozen. अभी तो और खा रहा था. अपने विनोद जी ने बोला आइए जल्दी आइए, अपना क्लास शुरू होने वाला है. तो अभी छूट गया, लेकिन 1 dozen खा लिया. ठीक है. So easy to have breakfast as fruit. You need not to cook anything. For banana, you need not to wash also. Just peel and eat, right? And it is economical also. Right? So, step 1. Step 2. When you sit for lunch and when you sit for dinner, have 2 plates, plate 2 and plate 1. Plate 2, you eat all kind of cooked food, whatever you've been eating. It can be noodles, it can be rice, it can be bread, roti, whatever. But before you start eating it, first you finish plate 1. Plate 1 means 3 to 4 kind of vegetables in raw form. Tomato, cucumber, radish, carrot, there are many vegetables which one can eat in raw into 5. My body weight is 17 to 5, that becomes 350 grams. So this is 350 grams of medicine. We all eat vegetables in raw, but when you eat in this quantity, it becomes medicine.
When you eat vegetable in this quantity, your body produces enough nitric oxide, and that is the cleansing agent. It cleans the body. Then you eat this, right? Lunch, first I eat this, then I eat this. Dinner before 6 p.m., first I eat this, then I eat this. I am not reducing your food, I am increasing the food. Final, third step. Don't eat any animal food and dairy products. Don't eat any fat food. Right? So it is very hard for some people to stop eating animal food, right? Those who have been non-vegetarian. But when you reduce eating this, you see the improvement very quickly. और क्या लेना है? Sprouts, nuts, maybe एक मुट्ठी में, plenty of fruits, lot of sunshine. This is called DIP diet. So this is food as medicine. And the third, the most important medicine, next slide, is 0-volt medicine. 0-volt. आपकी immunity, the immunity of your body is strongest when your voltage is 0. This is an electrical equipment. This is electrical equipment. This light is electrical equipment. They have their own voltage. Similarly, your body is also electrical equipment. You also have a voltage. हमारे body की voltage कितनी है? इस वक्त अगर voltmeter होता, measure करके देखते, we all have some voltage like this, right? Whenever we will have a voltage, our immunity will not work perfectly. हमारी voltage शून्य कब होती है? Anybody knows? जब आप धरती को टच करते हैं. The voltage of the earth is 0. When you touch the earth directly, your voltage becomes 0. When your voltage is 0, your immunity is at the peak. And when your immunity is at the peak, the disease vanishes very fast. How fast? The next slide. If you do this, after this you go out, not on the concrete, but where there is earth, even in the river. When you enter the river, what will happen? Within 10 seconds, your voltage will become 0. You can check it through voltmeter. If you can remain there for 20 minutes, your mood will improve, stress will reduce. But if you keep staying there for 45 minutes, heart palpitation goes away. But if you keep staying there for 1 hour, all kind of pain restarts. Knee pain, joint pain, it starts vanishing. But if you can do it for 1 to 2 hours every day, better sleep every night. And if you can do it for overnight, how we do? We cannot stand outside overnight, but take a conductive wire, एक तार ले लो, like these wires. One end you touch, connect with the body, other end you dig outside in the earth. जैसे अर्निंग करते हैं. आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, आप देखेंगे हर पेशेंट के साथ एक तार, वो तार बाहर जाके अर्निंग में, बाहर जाके जमीन पे लगा. If you come to our hospital, you will see that every room, every patient is connected through wire. The wire will goes out through the window and it digs inside the earth. So overnight they are sleeping, but they are connected with the earth. So तो जो गैंग्रीन के पेशेंट होते हैं, गैंग्रीन या इंजरी या जिनमें पस निकलता है, कैंसर के पेशेंट्स, they start recovering very fast because the immunity is very strong. If you can do it for 7 days, every day for 1 hour, by doing only this one thing, you can reduce the blood sugar, blood pressure, right? So this is what is called 0-volt. Humans are the only animal who are dissociated from earth. Rest all the animals, they are always connected with earth. Among the human, only the beggars, those they don't have home, those who don't have even sleeper, they are also connected with the earth. You see, we all, including me, we are wearing coat even when we feel cold, we are suffering from some fever. But the beggars, जो भिखारी हैं, आप सोचिए उनके पास तो कपड़े भी नहीं है, घर भी नहीं है, वो तो नहीं मरते. आप मिलके देखिए उनसे. Why? Because they are connected with the earth, right? So the earth is protecting them, right? Think of a small baby, an infant. छोटा बच्चा कई बार चिल्लाता है, रोता है. Small baby in a very distressful mood, shouting and crying. Nobody is able to calm the baby. But when the baby comes in the lap of the mother, माँ की गोद में आते क्या होता है? शांत हो जाता है, माँ कुछ नहीं करती. Similarly, when you come to the lap of the Mother Earth,
your pain and mental and physical go away. Right? So it is a science. ये science है. Right? And if you want to know more about the science, previous. No, itna, हाँ. You can read this book, Cure There Is Zero Wound. I've given all the evidences. We do it in our hospital, right? We know the people, if I can influence the person so that they touch the earth every day, that will help to recover from the illness. Simple. Earth as medicine, zero wound medicine. It is free, it is invisible, but it is most powerful. Free, invisible, but most powerful. Available everywhere, for everybody. When a bird is sitting on the tree is connected to the earth. So the bird is also getting connected to the earth. Right? But human being, they are getting dissociated, right? More away from the earth. So we are more sick. Right? Next, please. पीछे. और पीछे. The last is emergency medicine. If the person having heart attack, then emergency medicine, heat-death medicine, work very fast. If a person is having weakness, person is in pain, person having lot of swelling, person becomes unconscious, a person's blood pressure shoots high, I want to reduce it now, then the emergency medicine is heat as medicine. This is my book, you can download from my website vishrup.com/ebook. You will find this book where every evidence is there, but I will share how to do it, vishrup.com/ebook. All my books you can get it free from here. But I will share with you हम कैसे use करते हैं, how we use it. Emergency medicine. Now you recall, come back here, that these are the cancer cells, right? And if you want to discipline them, अगर आप चाहते हैं कि इनका एरिया दोबारा वापस आ जाए, right? And if you want to make the normal cell powerful against them, so one fastest way is you give fever to the body, right? अगर उनको fever आ जाए, तो ये powerless होने लगेंगे. These will become powerless, the cancer cells, and normal cells will become more powerful. How we can give fever to the cancer patient? The next slide. This is how we do give fever to the normal every patient. Take a bucket, step 1. Step 2, put water temperature 42 degrees Celsius, very hot, and let the patient sit and put both the leg in the bucket for 30 minutes. When you do this, जब आप ये करेंगे, बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? इनिशियली ऊपर जाएगा. Because you are giving heat, your body temperature will increase. When we see a patient with fever, normal patient with fever, then we want to contribute to the body more fever, because fever is not our enemy. So we want to support the body by giving additional fever. Getting the point? जब किसी को फीवर होता है, बुखार होता है, तो बुखार को उतारना नहीं है, बुखार को सपोर्ट करना है. कैसे? बाय गिविंग फीवर, मोर फीवर. तो जब वो बैठा है तो फीवर और बढ़ेगा. When the fever is too much, the infection are killed very quickly, right? And infection are killed very quickly, the brain will reduce the body temperature. तो फीवर बॉडी का जो है बनाया था वो वापस आने लगेगा. एंजाइना है, पेन है, वो कम होने लगता है. हार्ट का किसी को बहुत टायरिंग लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, वो कम होने लगता है. ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो आधे घंटे में 20% ब्लड प्रेशर रिडक्शन और नॉर्मली आता है. सो फॉर रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर, for curing the infection through fever control, for resolving the angina, and for giving relief from the pain and fatigue and weakness. This is called lower leg hot water immersion. LLHW, that's what we call it, right? So anytime any emergency situation you feel patient's blood pressure has increased, or in a fever he is becoming uncomfortable. But fever is not our enemy, so we support the body by giving additional fever so that the body can solve the problem while fever came. Right? So this, when you do it at the time for cancer patients, when you do this, while he is doing it, the body temperature will increase by half a degree.
यानी कि we are giving artificial fever to the cancer patient. And when you are giving artificial fever to the cancer patients, this cancer cells will become powerless again, and this normal cell will become powerful again. Right? So every single day, 2 times a day, we say the cancer patient do this. In our hospital, we do it. They can do it at their home, but you can see the result. How you know the patient is recovering? Through the symptom only, not through the diagnostic biopsy. If the weakness reduces, if the pain reduces, if the hemoglobin increases, if the weight increases again, patient is recovering. Right? Need not to check by biopsy, need not to check by PET scan, need not to check by mammogram, because those are not diagnostics. In the name of diagnostic, they are giving cancer. So how we know the cancer is there or not? How I recognize a cancer patient? मैं कैसे cancer patient को पहचानता हूँ? Whenever a patient comes to me and say I am a cancer patient, I look for 4 things to find out whether there is a cancer patient or not. Number 1, extreme weakness. Number 2, extreme pain. Number 3, hemoglobin drops by drastically within 1 month. Number 4, body weight drastically drops 10 kg in 1 month. For example, if these 4 conditions happens, he is a true cancer patient. Not because of the biopsy, but because through the biopsy, these 3. So what should be our aim? Our aim should be to relief in these symptoms. Weakness, if it vanishes, pain if vanishes, hemoglobin raises, weight raises, he recovered. That means he recovered. Right? So keep the definition of cancer like this, simple. Patient says, how I know I have a cancer? I said, you just check whether you are having these 4 or not. If not, you are not a cancer patient. If yes, then you are a cancer patient. Don't worry. Take these 3 medicines. Time as medicine, food as medicine, 0-volt medicine, in addition to that, heat as medicine. When you do this, now you check whether my hemoglobin is increasing. Oh, I am recovering from cancer. My weight is increasing. I am recovering from cancer. My weakness is going away. I am recovering from cancer. My pain is going away. I am recovering from cancer. Make it simple. Right? So, heat as medicine, we give it to our patients for not only cancer, for not only other discomforts, but also for chronic kidney disease. If the patient is already on dialysis, and if the patient wants to recover, if the doctor said that you need a kidney transplant, or patient already going for dialysis, अगर वो dialysis पे हैं, transplant की बोल दिया, if they come to us, what I do, I put the patient in a bathtub. Next slide. गर्म पानी के टब में 40 degree temperature, patient inside the bathtub, the water level is this. If you do it for 2 hours, so you are giving fever to the body for 2 hours. So after 2 hours, when the patient comes out of the tub, blood pressure reduced, weakness reduced, body weight reduced by 500 grams to 1 kg. The excess fluid deposit goes away. Right? So when you do it every day, he will not need dialysis anymore. Right? The most important. He will not need blood pressure medicines, and he start recovering from cancer, from chronic kidney disease. This is my hospital in Jaipur, as you can see, right? And these are the real patients. This is another hospital in Jodhpur, right? These are the real true patients, right? And at that time they were needing dialysis, but now no more dialysis. Why? Because when you do this, your skin becomes the third kidney. You have 2 kidney here, but skin becomes third kidney. How to make the skin as a kidney? Give it fever, number 1, and give it pressure, water pressure. When these 2 things you give, your skin acts as a kidney. Okay, you can test. You take a sample of urine and you take a sample of sweat. पसीने का बूंद ले लो and पेशाब का बूंद ले लो. Go for lab test. You will be surprised. Both of them are having equivalent nutrient inside. पेशाब में भी, urine में भी you will find creatinine, urea, uric acid, sugar, protein, magnesium, sodium, and all these things you will find in the sweat also. So sweat is through the skin and urine is through the kidney. So your sweat and urine is having the same purpose. So your skin is the third kidney.
When both the kidney fails, activate the third kidney. And when you activate the third kidney, the rest of the two kidney gets a chance to recover and they recover. And then you need not to do it anymore. So these things people do in my hospital and they recover from dialysis. They recover from kidney disease. But my hospital is expensive. So many people, they watch this video, these kind of videos, they do at their home. Many people, they do at their home and they also recover. Then they come to us, come to me in some conference. Sir, I saw that video, I was a dialysis patient, I got cured. I said, which hospital you got admitted? In which of my, they said, no, I did not come to your hospital, I did it in my home. Then how you did it at home? Then they start sending the videos. So next slide, how they do it in their home. Next. तो घर पे कैसे करते हैं जुगाड़ से, right? So if you say it is expensive, no, it is not expensive, right? So hot water and taking an industrial drum, sitting inside the drum will also solve the purpose similarly, right? Taking a fridge, take out the door, sit inside it. They were a kidney patient once upon a time. Now you see the bathroom, he made a wall and now he used as a hot water tub, right? And hot water already coming from the tap. He is an engineer, he made a portable hot water tub, having all the system, including the thermostat, including the heating machine. He's showing it inside. Portable, you can just carry it anywhere, right? So now, whatever I've shown you, these things, if you want to see the evidences, you must read these two books, End of Transplant and 360 Postural Medicine, right? And you will find all the evidences, how we do it, and you all can do it at your home. You can, even the people who are not educated much, illiterate, they all can do it. They are doing it only, right? These are very simple knowledge, very close to the nature, and these are the real medicine, right? And these are having no side effect, only side benefit, right? So many people, by using time as medicine and food as medicine, only these two medicines, they are able to recover their diabetes, hypertension, heart disease, all these kind of disease. Only when you are in a trap of a doctor, then starts the actual disease. You have to understand that, and you have to make the people understand. And to make the people understand, we have to be in plenty of numbers, trying to educate people, right? So that the knowledge should spread, right? So what we have done in the past, and I want you to get connected with us. Next slide, please. Next slide. So we have started Dr.B.R.C clinic at the Red Home, and about more than 500 clinic now. And in those clinics, the people like you, we train you, and then together we become partner in helping the patient recover at their home, right? So if you want to join with me, so to help the people, so you go to bishrup.com/clinic and you fill a form, and then my team will connect, or this is our phone number. You fill the phone number, leave a WhatsApp message, and my team will contact. So this is the way a person can get healed at home, in hospital, anywhere in the world. Because time is medicine, you can do it any point of time, anywhere. Food available everywhere. Earth, 0 volt, everywhere. Heat, everywhere. These things cannot be packed in a bottle. These things cannot be patented. These things cannot be converted into full-fledged industry or business. So even if these are the only thing which can help a person recover, these are not propagated. So I am thankful to Dr. Vinod Kashyap. He created a platform where we can propagate the real science, right? So, thank you. And I hope more and more of you will join together to spread the real science so that we can reduce the pain in the humanity to whatever extent we can. So before you leave, I am leaving some books for you, and in this books you will get lot of other information which I could not share because of the limitation of time, right?
but you will get many more. This book we released last month, 23rd of January 2025, and HMPV. So what I do you remember few months, 2 years back, there was one again a scare, monkeypox. याद है आपको? monkeypox आ गया, right? So again the same question, lockdown आ जाएगा. तब हमने तब भी ऐसे ही किया था, monkeypox pandemic launch. तब भी exactly same. इस बार हमारा जो एडिटोरियल टीम उसको बोला जहां जहां monkeypox लेगा उसको काट के HMPV कर दो. तो HMPV का बुक बन गया. और अगली बार के लिए कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तब वो कर देना. सिर्फ वो एक बार टेस्ट करना, वो वीडियो जो बनाया था टेस्ट करने का, वो नया है, राइट? बाकी सब वो होता ना पोस्टर, वो नया आ जाता है, कहानी पुरानी ही होती फिल्मों की, राइट? सो वही वाला हाल है इनका. सो ये समझाना पड़ेगा लोगों को, ताकि लोग इस डर के खेल के बाहर निकल पाए. और यही आप और हम मिलकर कर सकते हैं. ओनली वी कैन डू इट, राइट? तभी हम यहाँ पे सारे काम छोड़ के, आप यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, राइट? तो इसका पर्पस है कि लोग पहले तो हम खुद इसको अमल करें जो भी कर ही रहे हैं, फिर लोगों को भी इसको करें, राइट? तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, बीमार पड़ता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ बीमार पड़ गया तो मैं ठीक भी हो सकता हूँ अपने आप, राइट? आई हैव द पावर टू क्योर माई सेल्फ. और अगर मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकता तो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, राइट? सो आई एम सेटिस्फाइड एंड हैप्पी दैट आई कैन क्योर माई सेल्फ. इफ नॉट मी देन नोबडी एल्स, राइट? सो दैट कॉन्फिडेंस वी शुड गिव टू पीपल. यू हैव टू बिकम योर ओन डॉक्टर. थैंक यू. थैंक यू. अगर आप अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने क्लिनिक में DIP डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट या ग्रैड सिस्टम फॉर क्रोनिक किडनी डिजीज या सर्केडियन चार्ट या जीरो वोल्ट थेरेपी फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज या पेन मैनेजमेंट के लिए एक्यूप्रेशर या आयुर्वेदिक पंचकर्मा, वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी फॉर बेटर ब्लड सर्कुलेशन या डैन प्रोटोकॉल फॉर लंग डिजीज, ये सारे प्रोटोकॉल अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक www.bishrup.com/clinic में जाके फॉर्म भरें.